Okay, so illustration 15 देखो everyone. Good evening बच्चा. So देखो Dr. Pava is a professor and a resident of India. It's illustration 15. He submits before you the following incomes for computing his income under the head income from other sources. ठीक है? First point, he given a salary 15,600 per month from Vaishnav Commerce College. कितनी? 15,600 पर मंथ की ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चाहोगी पहली गल दसो सैलरी फ्रॉम अ कॉलेज प्रोफेसर सी हो तो सैलरी हेड से जाऊंगा क्यों मल्टीप्लाई लगा रहे 12 ना वेले उन्हें की पूछा उन्हें टोटल इनकम भी नहीं पूछी अगर मैं तो यू कुड हैव गिवन अ एक्सक्यूज कि सैलरी में भी तो डालना ही है बट सैलरी चाहिए ही नहीं सैलरी रिक्वायर्ड होता इफ दे हैव आस्क्ड जीटीआई यस और नो नहीं पूछे लीव दैट सेकंड पॉइंट पढ़ो ही इज द ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट बुक bookkeeping and accountancy, which fetched him a gross royalty of rupees 20,000 in lump sum, and which is in consideration of the transfer of copyright. He claims the following deductions from the amount. देखो royalty ਉਹਦੀ income other source से जाओगी 20,000, but ਉਹਦੇ against कुछ deductions भी he is claiming. First point, कहता जब ये book बनाई तो I gave salary to a clerk who collected for him necessary data and goes through the final proofreading 3,000. बिल्कुल genuine. बुक ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਲਰਕ ਨੇ I paid him salary ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ डिडक्शन yes or no then second कहना I purchased various books worth rupees 400 in connection with the revision of the books अपनी बुक ਦੀ रिवीजन ਕਰਨ ਲਈ कई ਹੋਰ books ਵੀ ਨਾਲ purchase ਕੀਤੀਆਂ for checking the points confirming the new edition है ना points तो ये भी खर्चा genuine है third one is telephone expenses of 1600 attributed to the publication and sale of his book and other matters in connection with the printing of the new edition of the book. In the 1600 ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ टेलीफोन expense आ गए ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਚ yes or no genuine तो ਕੀ ਕਰੋਗੇ royalty income ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ expense deduct ਕਰ ਦੋਗੇ deductions ਲੈ ਲੋਗੇ ਇਹਦੇ and ਤੁਹਾਡੀ net income ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ tell me 15,000 yes or no 20,000 जो सारे expense minus हुए and 15,000 is your net income from royalty. Read the next point. Point number 3. Income from articles which were published in Yojana. Yojana is a magazine. Magazine ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ 4,000 rupees. So बिल्कुल genuine income है other source. Next one. He lives in a rented house, paying rent rupees 3,000 per month. इस पॉइंट में पढ़ के कुछ लगा कोई इनकम थोड़ी है एक्सपेंस है दैट्स ओके ही हैज सबलेट 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस ऑन अ रेंट सबलेटिंग बच्चे ने माइंड से आया कि उन्हें हाउस पर रेंट पे देता मतलब 1/3 पोर्शन यस और नो एट अ रेंट ऑफ 1,500 पर मंथ दिस शुड कम इन अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी है ना 60 वाई सारे आने सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟਿੰਗ ਆਫ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਐਗਰੀ ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ प्रॉपर्टी 'ਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਦੋ ਰੂਮਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਊਸ ਨਾ so that will not go in my house property income that will go in my other sources okay so कितना रेंट रिसीव हो रहा बोलो 1,500 per month he has undertaken the liability of paying the municipal tax of 5,400 on the whole house and also the current repairs of the whole house amounting to rupees 6,000 ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ
1500 per month. So into 12 कितना आ गया? 18,000 is your income from the subletting of that house. But you will deduct the expenses incurred from that. की expense आओगे? बोलो कुछ भी. पहले सेकंड बोलो. म्यूनिसिपल टैक्स आऊगा या नहीं आऊगा या कितना? म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ. अच्छा वापस आओ चलो फर्स्ट पॉइंट थे. 3000 ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ? 3000 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ थे ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? पर मंथ है. इंटू 12 करोगे. ओके. और कुछ? रिपेयर्स कितना? 6000 क्या? ओके. ये पर मंथ तो नहीं है? पर मंथ तो नहीं है. और बोलो. 5400 म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑल्सो देयर. यस और नो? ये भी पर मंथ तो नहीं है? फॉर द होल हाउस फॉर द होल ईयर. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ. ਇਨਕਮ ਕਿਹਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਓਨਲੀ ਫॉर 1/3 portion. Be very careful. Income is for 1/3 portion. तो फिर expense भी कितना अलाउ होगा? 1/3 portion. This is the twist. 3000 rent you are paying, but for the whole house. जिन्ने जगह तो इनकम अर्न कर रहे ओदा ही खर्चा पाओगे. yes or no? Yes or no? So how much? 12,000. Then 5400 was the municipal tax of the whole house again. Again 1/3. 6,000 was the repair of the whole house. You getting that? This is the important point. Beware. आने की इनकम ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ 1/3 ਹਾਊਸ ਦੀ ਔਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦੋ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. ਇਨਕਮ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ. ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ. ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ. ਓਕੇ. ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? तो कितना आया? 2200 आ गया ਤੁਹਾਡਾ नेट इनकम. एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट. Dr. Pava received rupees 60 per lecture delivered at Ambedkar Institute during the previous year. He delivered 20 lectures. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ? 60 rupees per lecture. कितने lectures deliver कितने? 20 means your income is 1200. Next one. He is an examiner in a university also. This source gave him a remuneration of rupees 2600. और उतने उतने खर्चे की हुए? 60 rupees postage expense in connection with the examination work which were reimbursed by the university. ये मतलब है 60 rupees expense कितना? postage कोई और टिकट्स वगैरह खरीद के कह लो लगाते हैं. was related to the examination work. genuine खर्चा आया, माइनस मिलना चाहिए था से डिडक्शन, but it was reimbursed by the university. ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 60 rupees ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 60 rupees ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ. ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ? नो. ਇਟਸ ਰੀਇੰਬਰਸਡ. मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. Then he received 400 as remuneration for invigilation work in the university exams. Heavy income 2600 plus 400, 3000. Next one. His other incomes were winning from card games and betting. कितना? 6500. 10,000 तो नीचे है. TDS बारे सोचने की नीड नहीं है. Winning from chess 1000. Received interest on government of Nepal bonds 1500. ठीक है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब जीरो TDS अगेन. तो ग्रॉस नेट इतने भी सेम आऊगा. So simple solving you can put 6500, 1000 and 1500. Then the next point. Receive 2000 as dividend from an from an
Indian company in which the public is substantially interested. Dividend from Indian company simply taxable now with effect from assessment year 2021-22. Okay. Next one. Income from agricultural land situated at Ujjain. Ujjain is in India, so means it's in Indian agricultural income, so it's exempt under section 10(1). Exempt under section 10(1). किसी भी इकोनॉमी का बेस कितों स्टार्ट होता पहला एग्रीकल्चर so 10(1) very easily you can remember, yes or no? Section 10(1). Then 800 rupees per month scholarship for research work from UGC. Scholarship amount from UGC is again exempt. It is again exempt. Scholarship from UGC is exempt. ਤੁਸੀਂ अपने टेबल ਦੇ अंदर ही नोट पा के exempt लिख सकते हो, ठीक है? And also income from agriculture income section 10(1). Yes or no? Clear? So your income from other sources is 36,004. Any doubt? Any doubt? Anyone? Okay, clear na? So you can check from there. Easy है ना? So dividend from Indian company ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ point ਲਿਖ ਸਕਦੇ कि when the dividend income is below 5,000 again no TDS. When the dividend income is below 5,000 again TDS is 0. ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 shares के 100 shares परचेज कर ले. How many? 100 shares. कंपनी ने डिविडेंड रिलीज किया 2 रुपीज तक पर शेयर. How many shares you were having? 100. तो डिविडेंड कितना हुआ एक टाइम पे 200. उन हर सोचो 100 रुपीज 200 रुपीज उत्थे भी गवर्नमेंट टीडीएस कैलकुलेट करने लग जाए तो will be difficult. You getting that? Yes or no? Because dividends इतना भी आते sometimes बहुत छोटी कोई कंपनी और रिलीज कर दी है इस तरह भी डिविडेंड पर शेयर. Do you know that? 10 पैसे per share. Now if you are having 1,000 shares, you will get 100 rupees dividend. उत्थे भी गवर्नमेंट टीडीएस कैलकुलेट करने लग जाए तो it will be so happy. So below 5,000 TDS on dividend income is nil. Am I clear? Other star points winning from other than horse race. This point again we'll do from the other questions also. No TDS will be there. And casual incomes not exceeding 10,000 we discussed in the previous class also. Casual income like winnings and all, है ना? Not exceeding 10,000. There will be no TDS. Finish this one. Illustration 13 देखो. R Lakshmi has the following investments and incomes in the previous year ending 31st March 2000. What year केटा? Previous year 24-25. ठीक है? So first income is calculate her income from other sources. First is dividend from Indian companies. Tell me. Taxable simply. ठीक है? With effect from assessment year. केटा? 21-22. Yes. So 7,800 आ गया. Second one, examinership remuneration. Simply income taxable 2,000. कोई दिक्कत नहीं. Third one, royalty from publication of a book. How much? How much? 48,000. कोई दिक्कत नहीं जी. Fourth one, winning from lottery. 35,000. 35,000. And the date is given 1st March 2025. But नाल की लिखा हुआ winning from lottery अगर लिखा होता it will be taken as gross. But नाल की लिखता net. This is after TDS. ठीक है? After TDS. So what will you do? As it is a net balance, you will put this in the net column at 70 and you will find the gross value into 100 by 70 करके
50,000 will be the gross value which you have to put in the income column. Yes or no? ठीक है, पूरा इस चीज का बेस पिछले लेक्चर समझा है. नेक्स्ट वन. Rupees 40,000, 10% debentures of a company unlisted. 40,000 the 10% interest will be 4,000. So 4,000 using 10% TDS you can solve the box, but bar the gross value ही पानी 4,000. Yes or no? What will be the box? 100 minus 10 is equal to 90. Yes or no? So 4,400 and 3,600 will be in the box. Point number 6. Rupees 40,000, 12% Punjab government securities. 40,000, 12%. What will be the answer? 4,800. Punjab government securities. Government securities. Zero TDS. So 4,800 gross, 4,800 net. Zero TDS the according show करके you can put. Mind से अंदर box ना बनाइए था मैं चलूँगा. No. You will show using the box. फिर माइंड से अंदर अगर ग्रॉस ही फाइंड हो रहा मल्टीप्लाई करके परसेंटेज, why are we making the box? नेट बाहर तो जाना नहीं, बाहर तो ग्रॉस जाना, ग्रॉस डायरेक्टली मिलेगा. इन दिस क्वेश्चन यू लर्न अबाउट कि नेट क्यों जरूरी है. रीड द नेक्स्ट पॉइंट. 7th point. Rupees 50,000, 13% less tax commercial securities. 50,000, 13% means 6,500. So 10% TDS the according box बन गया, but bar the gross value ही जाओगे. This you have calculated using box. 8th point. Rupees 40,000, 10% tax-free debentures of a company unlisted. So 40,000, 10%, 4,000. But listen. Ninth point also read. Rupees 5,400 as interest on tax-free debentures listed received on 1st March 2025. Listen very carefully. Read the paragraph in the lower read the lines in the lower paragraph. They are saying in October 2024, she sold the above rupees 40,000 10% tax-free debentures of a company for rupees 45,000. Which one they are pointing out? 40,000 10% tax-free debentures means this one. This you have sold. And in December 2024, she inherited rupees 63,000 10% tax-free debentures listed of XYZ Company Limited from her father. Interest on above securities falls due on 31st December every year. Now then, October 24 she sold the above debentures. Debentures the interest का due होएगा December 31. And in December 24 she inherited the debentures 63,000 वाले. वो एक debentures खुद नो मिल गया. Listen now, 8th point. Tax-free debentures sold. Yes or no? In which month you sold? October 24. Interest कर दी उसी December 31. मिलूगा interest. Sold before the interest date, then you will not get interest. So these debentures are sold, so no calculation. Next one. This is a separate point. Read this also again. In December 2024, she inherited rupees 63,000 10% tax-free debentures of XY Limited, XY Company Limited from her father. दिसंबर च इनहेरिट किया और दिसंबर च इंटरेस्ट ड्यू से मिल जाऊगा कि या नहीं. व्हाट्स द अमाउंट? 63,000. इंटरेस्ट रेट 10%. कितना इंटरेस्ट होया? 6,300. नाम लिखा टैक्स फ्री. नाम की लिखा
टैक्स फ्री, टैक्स फ्री डिबेंचर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ TDS लगता तो है, बट योर एक्चुअल अमाउंट गोज टू द नेट वैल्यू, गोज टू द नेट वैल्यू। तो 6300 इंटरेस्ट में बनया उतना ही मिलेगा, टैक्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ग्रॉसिंग की जाए, and it will form the part in your income like 7000। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ? 63000, इंटरेस्ट रेट was 10%, you will get 63 in hand, yes or no? TDS ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कैलकुलेट किया जाऊगा ग्रॉसिंग ਉੱਤੇ, और ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਫੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 7000। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ आज भी 70,000 ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ, then your income would be 7,000, yes or no? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ? 63,000 ਦੇ, then also your income shows 7,000, because these are tax-free debentures, are you getting that? ठीक है, so इस पैटर्न में आता दिसंबर इनहेरिट कर ले, दिसंबर ड्यू सी, ठीक है। which point is left? Ninth point, read that। interest on tax-free debentures received on 1st March 2025, 5400, 5400 is the interest income or interest received, what they have written? Received, in a received है, again it will be put in the net form, net the grossing करके बाहर put करता 6000, clear? Total आ गया 1,36,100। now read the last lines, they are saying she claims the following deductions, that is collection charges for interest and dividend at 2% of net amount realized। tell me, collection charge of dividend deduction मिलती या नहीं? नहीं मिलती, इसको तो लीव कर दो, ये सुनो। collection charges of dividend are not deductible, तो लीव करता। collection charge for interest also किस रेट पे? कहते 2% ऑफ द नेट अमाउंट रियलाइज, नेट अमाउंट रियलाइज्ड, समझे? नेट अमाउंट मैजिक बॉक्सेस से फायदे समझे? नेट अमाउंट अगर नहीं फाइंड किया इस जगह आके दिक्कत आओगे, यू गेटिंग दैट? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली देखो कई जगह ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता ग्रॉस मिल गया, ग्रॉस ही पुट करना, बच्चे के माइंड च आन लग जाता कि वाई आई एम मेकिंग द बॉक्सेस, बट बॉक्सेस की इंपॉर्टेंस केड़े पॉइंट ने सिखाई? टैक्स फ्री वाले ने भी सिखाती, सिखाई ना, यस और नो? और बॉक्स की इंपॉर्टेंस उन नेट वाले, नेट के ऊपर तुसे कलेक्शन चार्ज लगाना, उन्हें भी सिखाती, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਡਿविडेंड ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਮੂਨरेशन, नहीं चाहिए। रॉयल्टी नहीं चाहिए, लॉटरी नहीं चाहिए। फिफ्थ इज डिबेंचर इंटरेस्ट, सिक्स्थ इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेवंथ इज इंटरेस्ट, एट्थ इज इंटरेस्ट, नाइन्थ इज इंटरेस्ट, टेंथ इज इंटरेस्ट। डॉट्स लगा ले साइड पे, दीज आर द इंटरेस्ट। किधर ते लगाना? नेट ते या क्रॉस ते? नेट, सारे नेट इंटरेस्ट ऐड करियो। फर्स्ट विल बी 3600, then 4800, then 5850, 5400, 6300, 25950। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ? 2% was the collection charge, clear है जा? So 519 the deduction मिली under section 57, and this is your income from other sources, taxable income from other sources, 1,35,581। clear, yes or no? जैसे बनाया हुआ था, but it was sold, so no need for that। कभी होता है ना, बंदे ने पहले बना लिया, ड्रॉ कर लिया, बट द पॉइंट इज ऑफ नो कंसर्न। फिफ्थ पॉइंट, नेट अमाउंट सही है ना? अभी कलेक्शन के काम आया। कलेक्शन चार्जेस आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द इंटरेस्ट।
So we need the boxes to pick up the net values 3600, 4800, 5850, 5400, 6300. Total क्या आया? 25950. Depends upon question. अगर वो ग्रॉस से कह दोगे फिर आ वाला पॉइंट का स्कोप चेंज हो जाएगा. They have specified on the net amount. Okay, yes or no?